Bismillahirrahmanirrahim. Students, this is your Ustad Accounting Academy. In this YouTube channel, we are solving the problems mentioned in the Sohail Afzal book. This video is about the Sohail Afzal book, chapter number 8, ICOM part 2, problem number 9. Chapter 8 is about the retirement and death of partner. In the question number 9, he says X and Y are in partnership, sharing profits and losses in ratio of 3 to 1. There are the two partners, students. Each partner is getting sharing ratio 3 to 1. It means X is getting 3 by 5 and Y is getting 2 by 5. They insure their lives joint jointly for rupees 75,000 at an annual premium of rupees 3,500. उन्होंने एक इंश्योरेंस कराई हुई है ज्वाइंटली, लाइफ इंश्योरेंस को बोलते हैं. द इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट इज 75,000. उसका जो प्रीमियम सालाना वो देते हैं, दे आर गिविंग 3,500 पर ईयर एज ए प्रीमियम डेबिटेड टू बी द बिजनेसेस विच इज पेड बाय द बिजनेस. यानी कि बिजनेस इज पेइंग प्रीमियम but the insurance is about their partner's life. So this is one point. Second, he says Y dies 3 months after the date of the last balance sheet. He says that why one of the partner has no more with in the world now because of his death. Partnership firm is closed, and this death was 3 months after the last balance sheet days, and this death was after the 3 months after the last balance sheet date. According to the partnership deed, Y's legal representatives are entitled to the following payments. जो पार्टनरशिप जो डीड है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसके मुताबिक जो वाई के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर गेटिंग the following payments. Number one, his capital as per the last balance sheet. Whatever the capital is mentioned in the last balance sheet, he will be paid. Interest on above capital 6% per annum to the date of death. In other words, 6% interest will also be paid on the capital. His share of profit to the date of death calculated on the basis of last 3 years profit. The last year, based on the last 3 years profit, his share of profit will be calculated. His share of insurance policy, यानी share insurance policy भी उसको दी जाएगी. His drawings are to bear interest at an average rate of 2%. Drawings on the drawings interest will be calculated by 2% on the amount of the respective of the period. Whatever the period is there, 2% interest on drawing will be calculated. Y's capital as per the last balance sheet was 40,000. He says कि जो Y का जो capital था last balance sheet के मुताबिक that is 40,000. And his drawings to date of the death were 5,000. उसकी जो drawing थी up to date of his death were 5,000. The last year's profit was 30,000. जो last year का जो profit था वो 30,000 पे था. Draws Y's account to be ready to his legal representatives. उसने कहा कि जो वाई का अकाउंट बनाए कि उसको कितनी अमाउंट पे करनी है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को. स्टूडेंट्स, अपेरेंटली दिस क्वेश्चन लुक्स लिटिल बिट डिफिकल्ट. लगता है ऐसे ऐसे जैसे बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है, बट इट इज वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन. आल्सो इट इज नॉट लेंथी क्वेश्चन. एक बड़ा छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है. इंशाल्लाह वी विल कवर easily this question. If you get this type of question, you should be happy because this type of question does not take too much time. आप इस किस्म के अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आपको बड़ी खुशी खुशी क्वेश्चन को हल करना चाहिए because it is very simple to calculate and simple to solve. Let us solve now. Page number 360, chapter number 8, question number 9. You can see on the screen also. स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द कैपिटल अकाउंट. उसने भी रिक्वायरमेंट भी यही है कि कैलकुलेट द कैपिटल अकाउंट. वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कैपिटल अकाउंट. वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. यू कैन सी द कैपिटल अकाउंट ऑफ वाई ऑन द स्क्रीन.
अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे वी हैव टू प्रिपेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रिपेयर द टी अकाउंट, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज द लेजर, डेबिट साइड particulars rupees, credit side particulars rupees, this is the debit side and this is the credit side, ये आपके सामने है। You will start it from the opening balance. Opening balance 40,000, that is given in your question, 40,000 last year, this is the opening balance। Insurance policy 30,000, ये 30,000 insurance policy कैसी है ये, let us solve it now। In the calculation, look at the insurance share of insurance policy। Insurance policy amount is 75,000 है। In case of death, the policy insurance premium will be given to the partners। तो 75,000 उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी थी, उसमें से जो Y की डेथ होगी, Y शेयरिंग रेशियो इज 2:5। सो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 30,000। दिस 30,000 विल गो टू द Y कैपिटल अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू नो, यानी कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी उसको पैसे मिले हैं उसका 2/5 वाइफ को मिल जाएगा। नेक्स्ट he says interest on capital, interest on capital 600, ये कैसे कैलकुलेट किया, लेट अस सी दिस वन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 हमारा पास कैपिटल है, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, 6% यू नो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ही सेज दैट इंटरेस्ट ऑन अबव कैपिटल एट द 6% प्रीमियम टू दैट डेट, टू द डेट ऑफ डेथ। तो 6% जो इंटरेस्ट होगा उसको मिलेगा, लेकिन अब हमने देखना है कि उसकी डेथ कब हुई है। लास्ट बैलेंस शीट से 3 महीने के बाद उसकी डेथ हुई है। ही कैन अकॉर्डिंग वाई डाइज ऑन 3 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। अब देखो हमने 3 माह का इंटरेस्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ। तो इस तरीके से उसका 3 माह का इंटरेस्ट निकलेगा, दैट इज 600। वो 600 भी हमने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में इंसर्ट कर दिया। शेयर ऑफ प्रॉफिट 3000 कैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया, लेट अस सी नाउ। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया 3 मंथ का शेयर ऑफ प्रॉफिट था। उसने कहा हुआ कि शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो भी कैलकुलेट करना है लास्ट ईयर्स बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो था 30,000, इट इज आल्सो गिवन इन योर क्वेश्चन। जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो भी 30,000 है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये देखें, ये लास्ट ईयर प्रॉफिट वाज 30,000, इसका हमने 3 माह का निकालना है, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ। तो सिंपल आपका 7,500 टोटल 3 मंथ का प्रॉफिट निकला। लेकिन ये जो है ये वाई का नहीं है, ये टोटल 3 मंथ का प्रॉफिट है। वाई विल बी शेयर ऑफ वाई विल बी 7,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5। 2/5 कौन सी अमाउंट है, कौन सी चीज है ये, दैट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि उसने गिवन है। सो 3,000 share of profit we have also written over here। Now we will go to the other side, interest on drawings। Interest on drawings, he says that there should be 2% interest drawings 2% और उसकी जो drawings कितनी है वो है 5,000। Students, keep in your mind whenever you have to prepare the capital account, you must do things on the debit side। You must write you must keep the points that interest on drawings and drawings you should write on the debit side। अब देखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 100, ये कैसे कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सिंपल 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2%। अब हमने स्ट्रेट वे वी हैव कैलकुलेटेड 2% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये हमने स्ट्रेट वे क्यों कैलकुलेट किया, ही सेज इन द क्वेश्चन, ही सेज हिज ड्राइंग्स आर टू बेयर इंटरेस्ट ऑन एवरेज 2% द अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। यानी उसने कहा कि इसमें पीरियड को कैलकुलेट नहीं करना, so we are not calculating the period, simple we will calculate the 2% drawings, 5,000 into 2%, that is the 100 we have written 100 rupees over here। Not only interest on drawings but the drawings amount will also be written on the debit side। So total we have all the calculation we are complete। Now what will we do, हम इनको क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, दैट इज 73,600। आउट ऑफ 73,600 विल माइनस 100 माइनस 5,000। सो ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिख भी दिया होगा, 73,600 माइनस 100 माइनस 5,000, दैट इज 68,500। 68,500 is the balancing figure। So students, this is the amount, you can also see the answer 68,500।
ये है सिंपल, देखें कितना आसान क्वेश्चन था, इजीली वी कैन सॉल्व विद इन 10 मिनट्स। इफ यू हैव द प्रॉपर प्रैक्टिस यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 10 मिनट्स। I hope students this question will also be easy for you like the other questions. Problem number 9 हमने सॉल्व की है। इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो we will go for the problem number 10। प्रॉब्लम नंबर 10 भी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड मैं कर दूंगा। वेट फॉर अंटिल दैट टाइम स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दुआ में याद रखिएगा, और जहां पर आप अपने लिए दुआएं मांगेंगे हम मेरे लिए भी दुआएं मांगिएगा। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।